हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक फ्लावर पेंटिंग बना रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग 3 शेड्स लेंगे फ्रॉम लाइट टू डार्क। फिर हम लोग इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये बैक में क्लाउड्स की तरह लगेगा। एंड नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग बैकग्राउंड ब्रांचेस। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही लाइट ग्रीन कलर लिया है, बट मुझे बाद में लगा कि कलर वॉज टू लाइट, सो मैंने कलर को थोड़ा डार्क कर लिया। एंड नाउ वी विल मेक द ब्रांचेस दैट आर क्लोजर टू अस। और इसके लिए हम लोग काफ़ी डार्क ग्रीन ऑलमोस्ट ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। Now we will start making flowers. For this I am using a really bright yellow color. I have made this color by mixing permanent yellow with titanium white and a hint of cadmium red. ये स्मॉल फ्लावर्स हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड ब्रांचेस में बनाएंगे। अब हम इसी मिक्सचर में थोड़ा और कैडमियम रेड मिला के इन्हीं फ्लावर्स के रूट्स बनाएंगे। Now we will start making larger flowers that are closer to us.
आप बीच बीच में थोड़ी बहुत फिंगर पेंटिंग्स भी कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स टू ब्लेंड योर कलर्स, बट ऑलवेज रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स बिफोर डूइंग दिस, बिकॉज जो आपके हाथ में नेचुरल ऑयल होते हैं इट कैन रियली मेस अप योर पेंटिंग। In these bigger flowers we'll do a lot of layering, तभी ये natural लगेंगे। After adding all the layers, अब हम लोग detailing start कर देंगे। For this I have mixed titanium white with a hint of permanent yellow.
And that's it. This is how my version of this painting turned out. Thanks for watching and please subscribe.